टुडेस सेशन मुझे मेरी टीम ने बोला कि मुझे आज सेशन डेली प्लान पे लेना था कि डेली प्लान कैसा होना चाहिए। अब देखो यहां पे ना there are people who are in college or who are working aspirants. So for them, I have a plan. I'm calling it Model A. Model A is for what? Model A is for students who are working. Model A is for students who are for aspirants who are working or aspirants who are still in college and they're preparing for 2027 examination. देखो, I'm assuming you have 5 to 6 hours in a day, not more than that, perhaps 5 hours in a day. अब इसमें ना देखो, if you remember the first phase, अपना फेज वन क्या था? अपना फेज वन वॉज फ्रॉम नवंबर टू जून। तो आर फेज वन वॉज फ्रॉम नवंबर 2025 to June 2025. This is our phase one. Phase one में what you should be doing? You should be doing GS for 3 hours. जिसमें आप GS क्लासेस करिए, कोई भी कहीं से भी पढ़ रहे हो या फिर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो सेल्फ स्टडी से करिए, जीएस की क्लासेस करिए, जीएस आप खुद से पढ़ना चाहते हैं खुद से करिए एंड रीड द नोट्स या रीड द बुक प्रॉपरली। जनरली आई एम अज्यूमिंग कि बहुत आप में से बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी हमारे जीएस प्रोग्राम का पार्ट है जो 2027 के लिए स्टार्ट हो रहा है। तो व्हाट यू विल डू, यू विल अटेंड क्लासेस एंड यू विल रीड योर नोट्स। आपको हर क्लास के साथ क्लास के हैंडआउट्स भी मिलेंगे, यू रीड देम। Second thing that you have to do is for 1 hour you will revise all these things. पहला आपने क्या किया? क्लास अटेंड करी, अपने नोट्स रीड किए। दूसरा आपने रिवीजन किया। Every day 1 hour should go for revision. Every day 45 minutes should be going for reading newspaper. 1 hour for solving PYQs. PYQs can be for prelims and can be for mains. This is something that you have to do. Are we getting it? तो नवंबर 2025 टू जून 2025 में दिस इज रफली द प्लान। एंड ऑन संडेज व्हाट यू शुड बी डूइंग, ये एक सेकंड दीजिए मुझे। हाँ, ऑन संडे एट द एंड ऑफ द वीक रिविजन फॉर द होल वीक। एंड इफ यू आर वीक इन सीसैट 2 hours ऑफ सीसैट ऑल्सो। सीसैट को मैंने स्किप नहीं किया है। फ्रॉम इफ यू आर समवन हु इज वीक इन मैथमेटिक्स, हु फील्स कि यार सीसैट इज गोइंग टू बी अ ट्रबल फॉर मी, start now. Every Sunday, spend 2 hours, 2 hours, 3 hours on CSAT. And if you are really pathetic, Sunday को 2-3 घंटे तो दो ही. Every day, start giving half an hour on solving some maths वाले questions. नहीं solve कर पा रहे हो, उसका solution देख के solve करो, but keep doing it. देखो, CSAT और aptitude is not learned, it is developed, and it will be developed with a lot of practice. So start doing CSAT from the beginning only. In case you are weak at it, if you are good at it, don't worry about it right now. So in the first phase, this is what we'll do. In second phase, ये थोड़ा सा modify होगा. If you are a working aspirant, you only have 5 hours. In the second phase, यहाँ पे if I take you to second phase, let's say, let me call it phase 2. Now phase 2 कब होगा? Phase 2 will be from July 2026, June, July 2026 to December 2026. What will you do? Monday to Friday, you will follow this. But यहाँ पे GS classes की बजाय, you will have optional. Because in phase 2, what were we prioritizing? We were prioritizing optional. Right? Phase 2 में, do optional, 1 hour, तो attend optional classes, read its notes, then do revision. This took 4 hours. Another 45 minutes for reading newspaper. Your newspaper reading should continue if possible. अब आपके क्योंकि basic GS notes बन गए, उन topics पे if in newspaper something new is coming, keep on adding it there. And यहाँ पे in this phase you will solve mains questions. जो जो टॉपिक आप करते जा रहे हो, देखो उससे अगर PYQ है तो कर लो. देखो if you are able to answer it or not. Now you say कि sir what about GS mains? देखो GS mains basic subjects तो हमारे हो गए फर्स्ट फेज में. This you should do from Monday to Friday. तो working aspirants या college going aspirants, Monday to Friday, in the second phase you focus on optional, and on Saturday Sunday focus on GS.
जीएस में जो मेंस वाले छोटे छोटे वर्ल्ड हिस्ट्री का थोड़ा सा क्वेश्चन रह जाएगा, गवर्नेंस सोशल जस्टिस का रह जाएगा, यू फोकस ऑन दैट. सो बाय एंड ऑफ दिसंबर यू आर प्रिपेयर्ड फॉर मेंस. आपने जीएस के भी मेंस वाले एरिया भी कर लिए हैं और थोड़ा सा रिवीजन करते हुए यू आर आल्सो डन विद प्रीलिम्स, यू आर आल्सो डन विद द बेसिक सब्जेक्ट्स. ओके, नाउ आफ्टर दिस कम्स फेज 3. फेज 3 में हम पूरा प्रीलिम्स पे फोकस कर रहे थे. दैट विल बी फेज 3 विल बी फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम January 2027 to April 2027. Phase 3 will be this 3 hours GS classes नहीं, रिविजन आपने ऑलरेडी सब पढ़ लिया है ना. 1 hour any CA update which is needed, go for that. 1 hour any CA update that is needed, and then read newspaper, solve MCQs, or at the end of the week give full length test. Revise for ये आपका phase 3 is what, prelims victory phase. Yeah, a phase where you are winning over the preliminary examination. Working aspirant ho, I'm assuming 5-6 hours hai, you do not have more than that. And similarly after mains the similar amount of time should be going for mains. But after mains now, my recommendation would be for everyone, mains wala phase, that is June 2027 say August 2027. Let me write it again. June 2027 say August 2027. I think even the working aspirants or college going aspirants, they should be like, ये period मेरे पास full time preparation के लिए available होना चाहिए. If you do not have this period for full time available for full time preparation, problem होगा, because mains के time you'll have to revise both GS and optional. Though you have completed GS and optional, but here you have to revise GS for 3 to 4 hours, optional for 3 to 4 hours, and then on the weekend, on Sunday, you have to give 2 tests, one GS का, one optional का. And इसके लिए my recommendation would be कि यार यहाँ पे take a sabbatical from your job, आप medical leave लो, कुछ भी करो, या and if you're in college, please ensure that by May June 2027 your college is getting over, so that you have full 2 months to prepare, 2-3 months to prepare, revise for mains. I would not say prepare for mains, to revise for mains. But if you look at the GS Foundation program at Level Up IAS, हमने भी इसे ऐसे ही plan किया है. What we are doing is November 2026 से जून 2026 तक, सॉरी नवंबर 2025 से नवंबर 2025 to June 2026 तक, we are focusing on fundamental areas: history, geography, polity, economy, ethics, science tech, environment, biodiversity and climate change, disaster management. Idea क्या है? You should be done for both prelims and mains of these things. In the GS Foundation program at Level Up IAS, in phase 1 यही कर रहे हैं हम. phase 2 में क्या करेंगे? phase 2 में, और यहाँ पे देखो, every Sunday will be taking your objective test, every Sunday will be taking your subjective test, every month you'll have monthly test, every 3 month you'll have quarterly test, 6 monthly test. तो जो वो revision का plan है ना, जो मैंने आपको suggest किया है, that is integrated in here. That will be done as part of this course only. अगर आप हमें follow करोगे, whatever I've suggested you, we have already integrated all of that in our GS Foundation course. Similarly, in this program only, if I go into second phase, June to December 2026, we are asking students to focus on more on their optional, and GS part में only limited things, only limited GS things have to be
done. And there will be more focus on revising GS. बिकॉज जीएस हम सब्सटैंशियली फर्स्ट पार्ट में ही कर लेंगे, फर्स्ट फेज में ही कर लेंगे. देयर इज मोर फोकस ऑन रिवाइजिंग जीएस so that by end of December 2026 you are fully prepared for mains. फिर in the third phase, in the level ups GS foundation program, in the third phase, that is from Jan 2027 to April 2027, we will take you through revision. We will make you solve 50 mini tests. जो भी जरूरत है प्रिपरेशन के लिए, we will do that. We will make you solve 20 full length test. इसके अलावा will also recommend you, आप बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस के भी ओपन टेस्ट, जो ओपन टेस्ट वो सबके लिए ओपन करते हैं, वो अटेम्प्ट करो, so that you get a feel of every kind of test which is being prepared. And in the end will make you solve 500 questions for each subject. जैसे जब in April you will feel like, now sir, I'm fully prepared for pre. My notes I've done, I've revised it, I've done current affairs updates, I'm doing mini tests. तो mini test भी हो रहे हैं मेरे सारे, मैंने full length test भी कर लिया, मैंने PYQs भी कर लिए. Now I'm fully done. Will say चलो आ जाओ, एक ही दिन में 500 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. एक हमारा इनिशिएटिव होता है रिवाइज थ्रू 500 क्वेश्चन, वेयर इन वन डे वी विल सॉल्व 500 क्वेश्चन, विल अगेन हेल्प यू रिवाइज द होल सिलेबस इन अ वेरी फास्ट ट्रैक मैनर. और ये इसके बाद फोर्थ फेज आएगा विच विल बी फॉर मेंस, वेयर वी मेक स्टूडेंट्स राइट मेंस टेस्ट सीरीज. मतलब जो भी सिस्टमैटिक प्लान होना चाहिए ना, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ आवर फाउंडेशन कोर्स. एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ इट. Test series, mini test, full length test, essay, CSAT, current affairs, everything is part of the program. We have made a plan which would ensure कि कोई भी बच्चा अगर 5-6 hours dedicatedly हमें दे रहा है, हम उसको पूरी तरीके से प्रिपेयर करवा देंगे. प्लस ऑप्शनल के लिए थोड़ा सा और एफर्ट देना पड़ेगा. तो बिकॉज वी डोंट हैव ऑल द ऑप्शंस, सो आई कैन नॉट promise you all the options, but for a few optionals, जैसे when we talk about sociology, when we talk about anthropology, when we talk about history, the best teachers in the country are at Level Up IAS. सबसे ज्यादा सिलेक्शंस इन सब्जेक्ट्स में कहां से होंगे? लेवल अप आईएएस से होंगे. ये 2025 का रिजल्ट आएगा तब भी आप देखेंगे, और फ्यूचर में भी आप देखेंगे. इन सब्जेक्ट्स के बेस्ट टीचर्स हमारे पास है, जीएस की बेस्ट टीम हमारे पास है. वी विल मेक श्योर दैट यू आर ऑलवेज ऑन योर टोज. यू आर ऑलवेज आस्क्ड कि भाई तुम्हारा सेकंड डे का रिवीजन हुआ कि नहीं, तुम्हारा 7th डे का रिवीजन हुआ कि नहीं. यू विल बी आस्क्ड कि यार 30 डे हो गए, नाउ 30 डे का फुल लेंथ टेस्ट है. वी विल प्लान अकॉर्डिंगली.